Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज डिटरमिनेटर फोर्थ लेक्चर या पूर्व तीन टा लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो सारी जो मैंने चैनल को नुआ आछन से मानन को रिक्वेस्ट करबी से माने जाई कि डिटरमिनेटर प्लेलिस्ट रे 1 2 और 3 तीन टा लेक्चर प्रथमे देखि देबे डिटरमिनेटर प्रॉपर्टी गुडा को रिवाइज करिवे रिवाइज कला पर डिटरमिनेटर फोर्थ लेक्चर देखिबा को आसीबे और जो माने आउरी नुआ आछन से माने टेलीग्राम ग्रुप को जिवे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करिवे और सब पीडीएफ डाउनलोड करिवे करेक्ट नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस. If every element of a third order determinant has value 8 गोटे third order determinant अच्छी तार each element is 8, so this is 8 8 8 8 8 8 and 8 8 8 is divided by 2, then what is the value of the resultant determinant? So सब element को हमें 2 रे divide करते हैं, so this will be 4 4 4, this is again 4 4 4 and this is again 4 4 4. Now what will be the value of the determinant? Obviously 0. कहेंगे ना ये दीटा डिटरमिनेटर दीटा रो या दीटा कॉलम तुम्हारा आइडेंटिकल हेगला, कोई भी दीटा कॉलम अगर दीटा रो आइडेंटिकल हेगला तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 by the property of the determinants. Right, now move to the next question. What the next question is, if all the elements of the two diagonal of a third order determinant are 0, there is a third order determinant and all the elements of the diagonal are 0, like diagonal elements of 0 अच्छी. Now these are 0 and these are also 0. Let this will be A, B, C and D. Right? Then what is the value of the determinant? Value of the determinant will be always equal to 0. या कोई expand करके check करो 0 है जो. देखो this is 0 into anything is 0. Next minus B into A into 0, 0 into D is 0, 0 into A into C minus 0 into 0 is 0. If the diagonal elements of any determinant is 0, then the value of the determinant also equal to 0. Then बहुत easy question देले खाली बुझिया दरकार. If the cofactors and minors, question डाउट के सेट कर दो. That's it. Now look, if the cofactors and minors of each element of a second order determinant, there is a second order determinant, let the determinant be A, B, C, D. Let the determinant be A, B, C, D. Cofactors and minors of each element of a second order determinant are the same. कोई भी वैल्यू आप ले लो, कोई भी वैल्यू लो. If you take any value of a determinant, its minor and cofactor is same. Then what is the value of the determinant in the second row and first column? Second row, first column. First column is C. So minor will be B. Minor जो element और minor अपन बाहर करिए, जो एलिमेंट और माइनर बाहर करे तार रो और कॉलम साइड देबे तो बी हेगला. ना व्हाट विल बी द कोफैक्टर इक्वल टू -1 रो पावर 2 + 1 इनटू बी व्हिच इज इक्वल टू -b. माइनर हेगला बी और कोफैक्टर हेगला -b. नाउ गिवन इन द क्वेश्चन दैट माइनर ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू द कोफैक्टर. ईच एलिमेंट और माइनर और कोफैक्टर दे जण इक्वल माने माइनर हेगला बी और कोफैक्टर हेगला -b दे जण इक्वल. माइनर बी को एपट नहीं गया सुन लेफ्ट हैंड साइड में 2b is equal to 0, therefore b is equal to 0. Then what is the value of the second row first column? Second row first column रा element value होची 0. What is the value of the element in the second row and first column? Second row first column माने c रो value बचाची. Right? If the cofactor and minor of each element of second order determinant are the same, what is the value of the element in the second row and first column of a determinant? Second row first column माने c रो value, b रो value 0 जेमते आसला c रो value मते सेमते 0 आसो. c रो value केमते 0 आसो, b रो minor cofactor आनी इक्वल कर दे. b कोन होची m12 हेगला c, c12 हेगला -c, ए दीटा इक्वल, therefore c is equal to -c, 2c equal to 0, c equal to 0. All the values will be 0. Correct? जेमते b 0 आसला सेमते c 0 आसो. कोई भी वैल्यू पूछेगा, जो भी वैल्यू पचारिबो तार वैल्यू 0 आसो. राइट? नाउ वन मोर क्वेश्चन. एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क को क्वेश्चन अछि. क्वेश्चन सेट करिया तापर सॉल्व करिया. ओके, नाउ लुक, LHS अछि A B C X Y Z P Q R. This is LHS, or you can say the first part. Right? The LHS is A B C X Y Z P Q R. This is the determinant. कौन प्रूफ करेगा? देखो y x z
y x z तो x y z रो रे अछि आपन को x y z कॉलम रे दरकार कोन करिवे रो को कॉलम रे इंटरचेंज कर देबे आउ डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी अछि ना इफ you change the rows, if you interchange rows into columns or columns into rows, if you interchange rows into columns or columns into rows, the value of the determinant remains the same. So row को जदि column करिवे और column को जदि row करिवे value same रहिबो. So I can change rows into columns. This is P Q R. So first row बनी गला first column, second row becomes second column, and the third row becomes third column. Correct? Now A B C बी ऊपर दरकार माने एटा एटी दरकार और एटा एटी दरकार वन इंटरचेंज करिवे थरे इंटरचेंज कले माइनस साइन आसो सो दिस विल बी बी वाई क्यू एंड ए एक्स पी सी जेड आर राइट नाउ एटा एटी दरकार और एटा एटी दरकार फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करिया पड़े जतले इंटरचेंज करियो आ गोटे माइनस साइन आसो गोटे माइनस साइन बाहर अछि ऑलरेडी आ गोटे माइनस साइन आसले प्लस हे जो so this is y x z this is b a c and this is q p r so this is the second part this is equal to second part now you need to prove that this is also equal to the third part LHS is equal to a b c x y z p q r this is the first part x y z को ऊपर नियंतु a b c तळु गण गोटे माइनस साइन आसला why because you are interchanging two rows so x y z will become the first row a b c will become the second row p q r will become the third row right now a b c third row को आसीबो p q r second row को जो आ गोटे माइनस साइन आसीबो माइनस माइनस प्लस so first row will be as it is and this is your p q r and this is your a b c so this is your third part only property interchange row column को interchange कर देले सम बनी गला and that too a 4 mark question now one more question देखो 6 marks रो question solve करियो बहुत important question 2008 2013 और 2015 रे आस्तला right now look a b c question को ध्यान से देखंदो राइट साइड अपन को a b c दरकार then 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c so from the first column take a outside from the second column B and from the third column take C outside. From first, second and third column take A, B, C common. Therefore, A from first column, B from second column, C from third column. So this will be 1 by A plus 1. This is 1 by A, this is 1 by A, this is 1 by B, 1 by B plus 1, this is 1 by B, 1 by C, 1 by C and 1 by C plus 1. Right? Now add those three. ये तीन को add करते हैं. Why? Because you need 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. So let's add C1 as C1 plus C2 plus C3. So this is equal to A, B, C into determinant of 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. Here also 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. And this is 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. Now this is 1 by B. Here is 1 by C. And this is 1 by B plus 1. And this is 1 by C. This is 1 by B and 1 by C plus 1. So from the first column, this is A, B, C into 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. We'll take common. So this into, here it is 1, 1, 1. This is 1 by B. This is 1 by C. This is 1 by B plus 1. This is 1 by C. This is 1 by B. This is 1 by C plus 1. Now, एबे कौन करिया देखो तीनटा 1 मिल गला दुईटा 1 को 0 करियो चेष्टा करियो so that is r1 is r1 minus r2 and r2 will be r2 minus r3 minus r3 so this is a b c into 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c into 1 minus 1 will be 0 0 and 1 1 by b minus 1 by b cancel minus 1
this is 1, this is 1 by b, this is 0, this is minus 1, this is 1 by c plus 1. Now expand by using first row. First row को यूज करके एक्सपांड कर दवा. जब फर्स्ट रो को यूज करके एक्सपांड करिया ए बी सी, फर्स्ट रो दुईटा एलिमेंट ऑलरेडी 0, 2 ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑलरेडी 0. तो मिडिल एलिमेंट जोटा अछि, मिडिल एलिमेंट रो हमें ताको सॉल्व करिया. तो मिडिल एलिमेंट रो साइन होचे माइनस और सेठी अच्छे -1. तो माइनस ऑफ माइनस ना लुक एक्सपांड करिया यूजिंग फर्स्ट रो. फर्स्ट रो ऑलरेडी दुईटा एलिमेंट 0 अच्छे, -1 रो एक्सपांड करिया. सो -1 इनटू रो और कॉलम को छाड़ देबे. So this is 0 into 1 plus c, 1 by c plus 1, that is 0. Minus of -1 will be equal to +1. So that is 1. So ABC into 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. एकदम simple sum. Right? So done. तो each video आमे कौन करछे, 3टा 1 mark sum, गोटे 4 mark रो sum, गोटे 6 marks रो sum. सबू वेराइटी सम को मु कवर करियो चेष्टा करछ, ताकि 1 मार्क सम भी टेक्निकली साउंड होइजबे, 4 मार्क सम प्रॉपर्टी यूज करी केमती करिवे, आ 6 मार्क सम रो प्रॉपर्टी यूज करी टू ब्रिंग ऑल द गुड कंटेंट्स व्हिच आर ऑफन कम्स ऑन द एग्जामिनेशन. राइट. तो आपण जदि चैनल रो नुआ अछन, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, और सब्सक्राइब कला पर बेल आइकन प्रेस करंतु, टेलीग्राम ग्रुप रे जाई जॉइन करंतु टू डाउनलोड ऑल द पीडीएफ फाइल्स. आ वीडियो को जेते पारिबे शेयर करंतु सांग मानक भितर, ताकि सब को ए वीडियो रे बेनिफिट मिले. राइट. तो डिटरमिनेंट 4 लेक्चर्स मु अपलोड कर साची. आउ कोन जदी आपन मानक आउ कोन करिवार अछि, आउ को सम रे प्रॉब्लम अछि, आउ को कांसेप्ट रे प्रॉब्लम अछि, तो मते कमेंट सेक्शन रे कहबे, सो दैट आई विल अपलोड अकॉर्डिंग टू दैट. अदरवाइज आई विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. ओके. So till then, bye bye and take care.